Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So in this video, we'll understand how is a cyclone named. As you know, recently Cyclone Asani hit a coastal area of Andhra Pradesh and Odisha. So we know the different names like Taute cyclone, Cyclone Phony. The name is we find a very different names. So why it is important to give a name of the cyclone? How is a cyclone named? This is most confusing thing in our mind whenever we read a newspaper. We'll try to know who had given this name. So first of all, why cyclone का नाम क्यों दिया जाता है? Why cyclone given a name? So first of all, to avoid confusion. Okay, पहला चीज क्या है कि to avoid confusion. किस तरह confusion होता है? So according to World Meteorological Organization, a cyclone lasts for a 1 week or more than 1 week. So there will be a possibilities that two cyclone can be formed at the same time. Okay, so distinguish between these two cyclone, their intensity, their speed. Okay, वो किस एरिया में फॉर्म हुए हैं, तो इसलिए naming is very important to distinguish between the two cyclone and also to remember for a public and scientific community. तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता है इस चीज में दो साइक्लोन को डिस्टिंग्विश करने में. एंड विद द हेल्प ऑफ नेमिंग ऑफ द साइक्लोन इट आल्सो फैसिलिटेट इन डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस. Okay, disaster risk awareness, we distinguish two cyclone according to their speed, then preparedness, management and reduction. So these are some important things. That's why naming of the cyclone is very important. Now how cyclone is named? Okay, start कैसे होता है? So it was story started in 2000. A group of nations called WMO ESCAP. So what is the full from WMO ESCAP? So World Meteorological Organization, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, which comprise 8 countries. उस समय 2000 में 8 countries जो थे इंडियन ओशंस के आसपास जो कंट्री थे, they decided to suggest a name of the cyclone. So it include the countries like Bangladesh, India, Maldives, Myanmar, Oman, Pakistan, Sri Lanka and Thailand. So in 2000 only 8 country had given 8 names from each country. So total name becomes 64. तो उसके पहले 64 name list was prepared, but in later years in 2018 5 more countries included in the list. Okay, it include Iran, Qatar, Yemen, Saudi Arabia and United Arab Emirates. So total number of 5 country also added. So total country become 13. तो पूरे country कितने हो गए? 13 हो गए. Now last year in 2020 Indian Meteorological Department released 169 cyclone name in April 2020. Means 13 names from each 13 country. So एक country ने 13 name बताया, दूसरे country ने 13 name बताया. So total country कितने हो गए? 13 into 13 is equal to 169 names. So this is how we find a different name of the cyclone that is suggested by different countries. Okay, now here we'll talk about what are the important guidelines should a country follow while giving a name of the cyclone. Okay, so we know very well how a cyclone is named by WMO. Okay, WMO World Meteorological Organization and IMD released in April 2020 list of 169 name. But there are some guidelines. Okay, guidelines to adopt name of the cyclone, and one if country follow the guideline, this all guideline, then this PTC called Panel on Tropical Cyclone accept the name and finally it given to the list. So what are the important guidelines are? First one, whatever the cyclone name proposed should be a neutral. It should be a neutral. It should not hurt, or we can say it should be neutral with respect to politics and political figure. Okay, it should not be linked with any of the country politics and political name of any of the personalities. It should not means more aligned toward the religious belief. It should respect the religious belief of all the country. It should be neutral with respect to culture and with respect to gender. Okay, so these 4 points are very important. While suggesting the name should be a neutral with respect to politics and political figure, religious belief and cultural, and then gender. Second important guideline is
it does not hurt the sentiments of any group of population over the globe. ओके ऐसा नहीं कि नाम सजेस्ट कर दिए और इट रिलेटेड विद द कल्चरल और एनी रिलीजियस बिलीफ और कुछ ऐसे ऐसे सेंटिमेंट्स जिससे लोग हर्ट हो रहे हैं उनके मतलब बिलीफ को खत्म करता है. इट शुड नॉट बी हर्ट सेंटिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ग्लोब. नेम शुड नॉट बी अ वेरी रूड एंड क्रूअल इन नेचर. ऐसा नहीं कि नाम इंडिया जैसे नाम सजेस्ट कर दिया बाबर, ओके, और श्रीलंका ने नाम सजेस्ट कर दिया रावण, साइक्लोन का नाम. ऐसा नाम नहीं होना चाहिए. वेरी रूड नहीं होना चाहिए, क्रूअल इन नेचर नहीं होना चाहिए, और इट शुड नॉट मीन साउंड लाइक अ वेरी डेंजरस. ओके, नाम बहुत ही सिंपल होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी शॉर्ट. छोटा नाम होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस. ऐसा नाम होना जो कि इजिली प्रोनाउंस किया जा सके, एंड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर. इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर. ओके, सो नाम छोटा होना चाहिए, इजिली प्रोनाउंस होना चाहिए, और ऑफेंसिव मीन्स ऐसा कोई नाम में गलती ना हो जिससे प्रॉब्लम हो. ओके, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम शुड बी 8 लेटर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाम जो सजेस्ट करते हैं कंट्रीज, उनका मैक्सिमम लेटर कितना होता है, तो 8 लेटर्स. मे बी दे कैन आस्क यू इन एग्जाम और इन इंटरव्यू ऑल्सो. So proposed name should be provided with its pronunciation and voice over. Suppose India will give a name, so India will also suggest how the name should be pronounced. उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, ताकि जो भी कंट्री इस नाम को जब पब्लिश हो, जब न्यूज रिपोर्टर उसके बारे में बात करें या न्यूज़पेपर में बात हो, तो वो उसको प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से हो. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन फोनी, इट्स कॉल्ड फोनी. नेम इज गिवन बाय बांग्लादेश साइक्लोन, लेकिन नाम देखो FANI. उसको बहुत कोई फानी बोलता था, लेकिन उसका मेन क्या है, साइक्लोन फोनी. Okay, so name should not be repeated. The last one is name should not be repeated. Once the name is used, then again same name is not used for indicating any type of cyclone. So these are the important guidelines.